Good morning, everybody, and welcome to episode 20 of Let's Talk About Options. Prepare yourself for markets before market hours by the Options School. Good morning, Sunny. How was your long weekend? गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। एक Okay. वेकेशन बनाई छोटी सी का काफ़ी काफ़ी समय बाद। Vacation हमेशा ही अच्छी होती है. हाँ, बिल्कुल काफ़ी समय बाद मैंने थोड़ा हॉलिडे लिया है। Okay. इट्स Great, ऑलमोस्ट great. 1.5 ईयर्स और मोर देन दैट। Okay. यू नो वेरी वेल क्योंकि किड्स हो गए थे तो उन्हीं में बिजी थे। Right. एक मौका मिला बस 3 छुट्टियाँ उसको यूटिलाइज कर ली। हमारे सारे व्यूअर्स मिस कर रहे हैं यार आपको. आप मंडे को भी नहीं आए. सर Okay, so let us start. This is episode number 20, and today we are going to discuss pearls of wisdom by none other than Warren Buffett. राइट दुनिया के जो सबसे बड़े what we will say trader या investor or whatever. इन्वेस्टर या So there are some pearls of wisdom. We found them to be very useful. Most of them are directly related to investments only. And let's see one by one, right? राइट First, he's saying on earnings. Never depend on single income. Make investment to create a second source of income. You should never depend on one income. If you are even if you are into job, even if you are into business, you always need to create multiple sources मल्टीपल of सोर्स income, राइट right? So that if something happens to that single income, you have a fallback arrangement also. बिल्कुल But mostly nowadays it has become very difficult even to stabilize one income, right? राइट Multiple incomes तो और ज़्यादा difficult हो जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल That is where you see our options trading come. We always say हम्म that okay, you can always start options trading and create a alternative source of income which is not disturbing your primary occupation, हम्म right? So that is why option trading is very important because if you do other businesses, they require a lot of your time investment, राइट money investment as well as time investment. राइट This is one business. If you treat it like business, it will behave like an excellent business, and it can give you a very consistent source of alternative income also. अल्टरनेटिव इनकम राइट राइट इनफैक्ट मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा कि इसमें भी ट्रेडिंग नहीं सिंपली ट्रेडिंग नहीं जो Hmm. हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर लेते हैं कैश में ट्रेड कर लेते हैं उससे बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज प्ले होती हैं जो आपकी हेज रहती हैं Exactly. तो वो आपको बहुत ही consistent source of income बन सकता राइट है, राइट right? Okay, let's see. Second pearl of wisdom. This is on taking risk. Okay, never test the depth of river with both the feet. वेरी So you need to take always a very calculated risk, right? It's not that okay, I'm putting everything into one shot and going ahead and taking a huge risk. राइट So there is a huge difference between a calculative risk and a blind risk, ब्लाइंड राइट right? So हमेशा आपको एक calculative risk है. That is what we always say, even in our strategies also. It has to be a very calculative risk. You cannot say that suddenly I have got a tip and I will put all my money into a particular stock, and then if something happens to that stock, you see, always markets can be manipulated. बिल्कुल बिल्कुल Something happens to रोज that stock, we are gone. मार्केट रोज सरप्राइज करती है तो आप अपने ट्रेड्स को या अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए और रिस्क एकदम कैलकुलेटिव रहना चाहिए Yeah, that is why you see, even after doing the workshop, I always say do paper trading for 1 month. राइट Market is not running away anywhere, right? So paper trading for 1 month means basically you're testing the depth of the river, not even with 1 feet. Right? बिल्कुल You're testing the depth of the river with a stick, राइट right? You're not taking any risk. Do paper trading and get your doubts ironed out. Get everything very crystal clear. Only then, even if it means that okay, you're doing paper trading for a month or even for 2 months, it, it is no issue at all. बिल्कुल सर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ये नहीं कि आज अपॉर्चुनिटी है तो हमें आज ही ट्रेड करना है ऐसा कुछ नहीं है अगर आप श्योर नहीं है अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए या आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो तो आप पेपर ट्रेड करो या एकदम मिनिमम लॉट में काम करो Right. मिनिमम क्वांटिटी और रोज रहती है और आगे भी रहेंगी. रहेंगी Right? कहीं खत्म नहीं हो रही है. मार्केट के अगले 10 साल 20 साल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. ओनली थिंग इज वी नीड टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल 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 मार्केट्स हैं तभी आप समझ लो कि इकॉनमी चल रही है मार्केट्स नहीं है तो इकॉनमी नहीं All right, रहेगी this is a reflection of overall economy also. Okay, let us see.
Uh, wisdom number three on spending, especially for you, Sunny. Right? If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Right. बिल्कुल जैसे होता है Right? ऐसा ही होता है. We keep on buying things, we keep on taking EMIs, loans. You see, last to last week I was traveling and I hired a cab from airport to this place, and the driver was having Apple phone, फोन right? राइट So I was really surprised कि यार ये कहाँ से आप लेकर आते हो. इसे नहीं सर, मेरा एक ही शौक है कि मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमेशा लेटेस्ट फोन रखता हूँ. And he was a taxi driver, राइट right? So I don't know what kind of income he is having and what kind of money he is able to spend, but मेरे हिसाब से that was a wasteful expenditure. And बिल्कुल if you keep on indulging in these kind of expenditures, obviously very soon you might need to sell things which you need also, राइट ये तो है सही right? बात So है apna you see, saving is also earning. You हम्म need to save. I am not saying, you see, you should be very spendthrift, but yes, you need to save, and you not do not spend on things which are totally unnecessary, हम्म right? But if बिल्कुल you still find value in certain things, please go ahead and buy, बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल And उस पे ज्यादा इन्वेस्ट करो जो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट करे इंस्टेड ऑफ जो वैल्यू डेप्रिशिएट करे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स एंड ये एंड इनमें ऑल जो दैट पैसा लगा दिया वो लगा दिया. लगा दिया वो खत्म ही है वो बिल्कुल यूज But करोगे आप अपने प्लेजर के लिए बस उसके खत्म okay, or you are using it basically to display ओह ये you have achieved something, right? हाँ जो Basically, last time हम लोगों ने बताया था, the person who is poor, he हम्म always keeps on spending more हम्म to cover his poverty, राइट right? So no need to do that. Whatever we are, right? उसमें कोई भी ट्रू शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल So if you need, yes, definitely. If you हम्म find functional utilities, definitely you should go ahead. बिल्कुल बिल्कुल But if it's just to show off, I think we should curb on whatever spending is there, बिल्कुल extra spending there, right? Next, on savings. This last time you were talking about this, Sunny. हम्म Do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. राइट बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये वॉरेन बफेट की कि पहले सेव करा जाए फिर Mhm. जो बचे लेफ्ट ओवर रहे वो उससे उसको स्पेंड किया जाए इंस्टेड ऑफ पहले स्पेंड कर लो लेफ्ट ओवर को सेव करो क्योंकि कुछ नहीं बचता स्पेंड करने का तो देर इज नो लिमिट. यू सी, हाँ इतना मटेरियलिस्टिक हो गई हैं चीजें कि आपको लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, यहाँ भी लगा दो, वहाँ भी लगा दो. तो देर इज नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग. राइट इट्स ऑलवेज बेटर, इट्स अ ग्रेट हैबिट कि फर्स्ट यू सेव. जो भी आपके राइट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे आप इवन राइट फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, राइट रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स कर पीपीएफ रहे कर हो, रहे हो वगैरह कुछ भी शेयर्स में डाल रहे हो, फर्स्ट गिव दैट मनी, टेक हम्म दैट मनी फ्रॉम योर बजट, and then whatever is left, you see, obviously if you see, if today you are earning 1 lakh rupees, मान लो आपका सैलरी 1 लाख की जगह 80,000 होता, still you would have survived, बिल्कुल बिल्कुल right? So राइट पहले वो अपने 20,000 पे निकाल लो and then राइट think that okay, this is my salary, उसी पे मेरे को काम चलाना है, और बिल्कुल this is my income, इसी पे मेरे को काम राइट चलाना है. So always pay yourself first and then start spending. तो राइट पहले you need to save and then you need to राइट spend, राइट right? सेविंग में आप अपने अपनी इनकम प्रोटेक्शन अपनी हेल्थ प्रोटेक्शन सब कुछ इंक्लूड होती सब कुछ इंक्लूड है होती है, और हाँ सब कुछ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सब आपकी राइट स्पेंडिंग है. स्पेंडिंग स्पेंडिंग बिल्कुल पीछे रह सकती है, राइट सेविंग को पीछे नहीं रखना, राइट बिल्कुल right? On expectations. Okay. Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. राइट Right? Again, uh, very useful thought. I don't know, is it, whether these kind of things will be, how far they will be useful in your trading, but one thing I've seen in life in general, if you keep, you see, you can always take two sides. One side is that okay, internally or externally, I will be honest. राइट Other thing is, which most of the people try to follow, that okay, externally I look very honest, internally I may not be honest, right? So then you are always in a trouble. So if you just follow one motto that internally, externally I am honest, and I find a lot of people are actually they want to be honest, but then because of circumstances, because of some pressures, they melt down, right? तो अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल एक बना लो प्रिंसिपल, यस आई एम ऑनेस्ट, तो आपको I think it rebounds very well. राइट You are
getting a lot of honesty from others also. तो right. जहाँ पे I am प्लॉइंग एंड प्लॉटिंग वहाँ पे मेरे हम्म, को भी सामने वैसे ही लोग मिल जाते बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल उसी बात की तरह है, जैसे अगर आपकी अगर आप सोच अच्छी है और आप पॉजिटिव में रहते हैं, हैं राइट इनफैक्ट आप एक तरह से अपनी एक फाउंडेशन अच्छी बना लेते हैं, राइट राइट। कोई भी राइट आपको डिगा नहीं सकता, वहां से हिला नहीं सकता अगर आप। exactly right so very expensive gift and respect people who are honest right राइट, so they are the real rich people in life बिल्कुल। on development the most important investment you can make is in yourself right? And I do not know. You see, after a particular period, we stop learning. We राइट, stop learning new things. बिल्कुल। So somebody has said, okay, you are young till the time you are excited to learn new things. हम्म, Once you stop learning, then actually you are old. So even if you are 61 years old and you want to learn things, you can treat yourself to be pretty young. Vis-a-vis, you are 29 years old and you don't want to learn anything new. you You now you are become old। then you are really old राइट, right? So the most important investment you can make is on yourself, बिल्कुल। right? So these are the six pearls of wisdom which we said. Okay, let us discuss, and हम्म, they are very deep. Although राइट, otherwise they may look very हम्म, simplistic, but if you go through them one हम्म, by one, they हम्म। look very deep, right? So what about market, Sunny? मार्केट का सर वैसे ही रहा, फ्राइडे को हमारी मेरी एक पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशन मार्केट के नीचे जाने की थी, बट उसने बिल्कुल सरप्राइज किया मूव, अप Mm-hmm. मूव देके। एंड मार्केट उसके बाद इनफैक्ट मंडे को भी काफ़ी अच्छा अप मूव लिया है इसने, कल के दिन। Okay. एंड ग्लोबल मार्केट्स बहुत पॉजिटिव नहीं, साइडवेज ही ट्रेड कर रही हैं आज। फ्यूचर्स देखें इसका, डाउ जोन्स का, लेट मी चेक। Overall, if you see markets, you see, let me summarize the whole month. Market ने 11,000 और 10,500 का open interest बनाया हुआ बिल्कुल है, right? पूरा बिल्कुल, राइट। month and although market पहले नीचे जाता रहा 10,930 or something it was there on election day वहाँ से 800 700 600 and even 10,500 lower open interest उसने break किया and I thought I think see, there was a closing of around 10,430 also राइट, राइट, right उससे भी नीचे चला गया and वहाँ से I don't know what has happened every day market is gaining almost 100 बिल्कुल points बिल्कुल। 10,430 से 10,000 almost 518 580 से almost 600 600 से yesterday's ऑलमोस्ट closing was सिक्स almost एटी एट। 700 हाँ 688 हाँ, right? समवेयर अराउंड From last three sessions, it has gone up by 300 points. 300। So this is market, right? बिल्कुल पहले जब नीचे जाने लगता है तो नीचे ऊपर जाने लगता है ऊपर बिल्कुल यहाँ पे एक interesting thing what happened Sunny if you remember we said when the highest open interest from 11,000 has राइट, shifted towards 10,800 and 10,800। on put side nothing has shifted put बिल्कुल side is 10,500 right from the beginning और अभी भी वो maintained है वही भी मेंटेन तो देन मार्केट शुड मेक अ मूव टुवर्ड्स 10,800 10,000। उस बिल्कुल टाइम शायद ये लग रहा था कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं हमें खुद भी आई डोंट नो हम लोग खुद भी कितने कन्विंस थे राइट, बट इफ यू सी दैट हैज हैपेंड बिल्कुल। market has made a big move towards 10,800 जबकि when market was 10,430 all uh, all technical analysts बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी आपके technical indicators थे हम्म, everything was saying okay it's very bearish it is very bearish हम्म, right or राइट wrong राइट, बिल्कुल सही so है। as of now, what is happening is huge amount of built up is happening on put side. You see 10,650 जबकि 650 10 वाले लाख बहुत का ज़्यादा है। लिक्विड नहीं होते हैं उस पे भी 10,23,000 ऐड हुआ है and 10,600 9,66,000 on put side it has added and on call side the huge fall right minus 1,333 on 10,600 राइट राइट, so till day before yesterday 10,600 was 10,600 call and 10,600 put were you see neck to neck राइट। but yesterday again market has gone up against expectations of almost most of the traders and now it is already 10,688 so where do you see expiry if you see maximum pain I think it is still at 10,600 राइट, and मेरे ख्याल से बात करें। 10,700 is 33 lakhs 10,700 put side is 26 lakhs but if you see yesterday's data 10,700 put side 7 lakh 14,000 or 10,700 call change in माइनस open interest is minus 57,000  7,000। राइट। so एक जबरदस्त move upside पे आया है and 10,800 although
एज ऑफ नाउ लुक्स वेरी वेरी वीक. 10,800 टच होता हुआ नहीं लग रहा है मार्केट, बट 10,700 needs to be protected by bears basically, right? क्योंकि 10,700 पे अगर इस तरह से पोजीशंस बिल्टअप हुई हैं जिस तरह से कल 10,650 पे हुई हैं, तो दिस मार्केट कैन गो अबव 10,700 ऑल्सो. बट अगर मैक्स पेन 10,600 पे मेंटेन रहता है, 650 हो गया, अब 650 हो गया कल की क्लोजिंग के बाद, तो 650 का मतलब ये है कि मार्केट एज ऑफ नाउ एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे, नीचे कर so 10,600 and 10,700. So within this range there can be expiry, and but अगर ये यहीं पे रहता है मैक्स पेन तो बिकॉज लास्ट फ्यू डेज में हमेशा, बट जनरली मैंने देखा है कि जो एक्सपायरी वीक होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे को एक अच्छा खासा मूव हो जाता है, देन ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट्स अपना फ्लैटिश रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के वापस वहीं जाके बंद हो जाती हैं, बट देयर इज नो रूल, राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा ही, राइट. बिल्कुल सो आपको क्या लग रहा है, आपका फिबोनाची वगैरह लेवल्स जो होते हैं उसके हिसाब से क्या लग एज रहा ऑफ नाउ मैं कोई फिबोनाची लेवल इसमें नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो गई है जहाँ से होनी थी ना है? हाँ. बाजार की, निफ्टी की. ओके. तो अभी अप मूव है, वापस अप मूव की तरफ है. ओके. एंड कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से बाजार किधर जाए. अपसाइड ही दिख रहा है अभी तो फिलहाल, क्योंकि जहाँ से इसने बाउंस लिया है हम्म. उस हिसाब से तो मोमेंटम और and जिस हिसाब से तीन तीन ट्रेडिंग सेशन इसने जोरदार बनाए हैं हम्म. अपसाइड की तरफ, हम्म. तो ऊपर ही ज्यादा वो दिख रहा है बाजार फिलहाल बट तो. ये तो यार मतलब पुराना टेक्निकल एनालिस्ट का स्टाइल है, हाँ सर, ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती दिख रही है, बिल्कुल नीचे बिल्कुल जा सर. रही है तो नीचे जा सर रही है. टेक्निकल जो है ना वो प्राइस को ही फॉलो करते हैं वो, क्योंकि बाजार जिस तरफ जाता है उसी तरफ वो हम तो उसमें इन्वेस्टर या ट्रेडर क्या करे, सर उसमें व्हाट उसमें काइंड तो ऑफ फिर व्यू? वही है ना सर, आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी है हाँ. ऑप्शंस में तो वही वो क्या प्ले करनी है वो डिपेंड करता है. लाइक मतलब उसमें आप फिर डायरेक्शनल पे बिल्कुल मत करो इस तरह की मार्केट्स में, राइट, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट क्लियर. राइट, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर. हम्म. तो बेटर है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उसी को प्ले की जाए. ओके. इनफैक्ट जैसे मैं बियरिश था फ्राइडे के दिन, राइट. तो मेरी स्ट्रैटेजी एक तरह आके एक पॉइंट पे आके वो हेज हो रही थी प्रॉपर, ओके. ताकि अगर बाजार वहां से ऊपर जितना भी ज्यादा जाए मेरे को हम्म. लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट मेरे को वहां से प्रॉफिट होगा. ओके. तो इस तरह से हेज करना चाहिए, क्योंकि मैं देखो मेरा एनालिसिस खराब हुआ वहां पर, बट अगर वो खराब हुआ और मैं अगर नेकेड पोजीशन लेता पुट साइड हम्म. बाय करता या कॉल राइट करता तो तो लॉस मुझे होता फंसा तो देती. लॉस होता, राइट. उसको मैंने हेज किया, देन वो मुझे पोजीशन उस तरह की बनाई हुई है कि बनाई अगर ठीक है नीचे जाती तो प्रॉफिट जल्दी हो जाता, राइट, अब नीचे नहीं गई ऊपर चली गई तो ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है, लॉस, राइट राइट, राइट. तो बिल्कुल यही ऐसा. होता है मार्केट्स में, यू नीड टू, अगर इन केस यू आर टेकिंग अ व्यू, आप आपने पोजीशन को इस तरह से हेज करना चाहिए कि ओके इफ माय व्यू इज रॉन्ग राइट, देन आई एम नॉट लूजिंग. दैट इज व्हाई ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्यों अच्छा हमें बेनिफिट करती है, क्योंकि राइट. अगर हम नेकेड पोजीशन फ्यूचर शॉर्ट कर लो या पुट ले लो या कॉल राइट कर लो, वो फंसा सकती हैं आपको. राइट. आपका हमेशा एनालिसिस बिल्कुल सही नहीं हो सकता, राइट. राइट. क्योंकि मार्केट है वो कभी भी चेंज करती मार्किस है. मार्किस है वो और मार्किस सुप्रीम है, सुप्रीम, वो राइट, हमेशा सरप्राइज करेंगी. बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मार्केट को वापस इवन 10,688 पे भी बंद होना है तो ऑब्वियसली वो 688 नहीं रहेगी, वो हो राइट, सकता है 588 भी दिखाए, हो सकता है 720 भी दिखाए, और बिल्कुल वापस आके 650 पे जाके क्लोज हो जाए. क्लोज हो जाएगा, बट देन अगर आपकी स्ट्रेटजी इज वर्किंग फॉर यू, बिल्कुल देन आप लोग पैनिक, हम लोग पैनिक नहीं करते, पैनिक नहीं करता. राइट. एंड सेकेंडली एज ऑफ नाउ आई विल से, अगर इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर जो कि ऑप्शन सेल करके चलते हैं, मोस्ट ऑफ अवर पीपल वी आर आल्सो यूजुअली ऑप्शन राइटर्स, राइट, अगर मोस्टली आप ऑप्शन सेल करके चलते हैं तो मंडे ट्यूसडे तक आपको अपनी करंट मंथ की पोजीशन से निकलना ही बेटर होता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम्स आप देखोगे, अगर आप 10,688 मार्केट है and 10,700 call is only 30 rupees, राइट, and if markets open the way today we are seeing, तो वो 30 से भी substantially नीचे चली जाएगी, right. And similarly if you see 10,600 put is only 18 rupees, although we always feel कि यार अभी तो सिर्फ 2 दिन या 3 दिन बचे हैं and it can give me decent returns, but then इसमें जो आपका risk reward है that becomes very very difficult, वो बिल्कुल, बहुत ही अनफेवरेबल हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज एक्सपायरी, देयर कैन बी अ डिसेंट मूव इन एनी डायरेक्शन, कभी भी हो सकता है वो, कभी भी तो वी शुड ऑलवेज, so I will suggest always you need to shift your positions by Monday or Tuesday. Tuesday एक्सपायरी or वीक को लेकर, maximum Tuesday is the last day. एक्सपायरी वाले वीक, Expiry wala Tuesday, राइट राइट, right? Expiry wala Tuesday. It's always better to go ahead and change your positions to next month or next to next month,
डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज द स्ट्रेटजी। राइट मार्केट स्पॉट से दूर रहना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि स्पॉट के आसपास रहकर ही रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल Even in our workshops, we talk. You see, never allow any of the positions to become in the money इन द or मनी even at the एट money. द मनी बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पे एट द मनी को छोड़ दो। अगर सनी आप थोड़ा सा लेटर से 10,700 इज एट द मनी, इसको अगर हम छोड़ दें एंड वी गो टू 10,750 और 10,800, देयर इज हार्डली एनीथिंग। प्रीमियम ही नहीं बचे बिल्कुल प्रीमियम कुछ नहीं है, 14 रुपीज है, 6 रुपीज 95 पैसा है। एंड अगर आप आज देखोगे द वे एस जी एक्स इज शोइंग, एस जी एक्स इज शोइंग -23-24 पॉइंट्स, तो ये प्रीमियम्स बिल्कुल खत्म जैसे हो जाएंगे, राइट। सो डजंट मेक मच सेंस अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी वेरी एक्सपर्ट ट्रेडर। राइट एक्सपर्ट ट्रेडर्स में एक मैंने देखा है कि वी ऑल्सो डू इन अवर स्ट्रेटजीज। If you see, I am not suggesting any trade. Please don't take it as a trade, right? If you see now, 10,600 is almost 89 rupees, राइट right? And 10,000, if I say 700, is 54 rupees. 54 plus 89 is almost 143 rupees. And I'm talking about a inverted triangle. If you see 10,600 is 89 rupees call and 10,700 put is 54 rupees. If you see 143 का premium है, 143 is the total, टोटल and at the end of the month, if market is between 10,600 and 10,700, तो वो the total should be 100 rupees. राइट So that means there are 43 rupees which can be made. This is part one. Part two, in case both the positions remain in the money राइट at around 315 on Thursday, दोनों ही पोजीशंस 10-10 रुपए डिस्काउंट पे चलनी शुरू हो डिस्काउंट जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एसटीपी। सो 43 प्लस 10 रुपीज ऑन बोथ साइड मेक्स इट 63। तो वो एक 63 वाला स्कोप है, बट देन सेफ्टी इज अप टू 10,763 एंड अप टू 543, राइट 5,536 or something like that, right? And इफ यू आर रियली एन एक्सपर्ट ट्रेडर, तो इस तरह की स्ट्रेटजी से आप अपनी कंटिन्यूस हेजिंग करते रह सकते हैं। बिल्कुल बट आई वुड से इट्स ऑलवेज बेटर, इस महीने में जो हो चुका है हो जाने दीजिए, राइट लेट इट बी नेक्स्ट वीक फिनिश्ड। नेक्स्ट मंथ आप में अपने जाइए नेक्स्ट बिल्कुल मंथ पे बिल्कुल अपने ट्रेड्स को शिफ्ट करना विल बी राइट एडवाइजेबल। इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे थे सॉरी हाँ। निफ्टी में एक्सपायरी मंथ वाले में हो जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडर है हम्म। वो तो समझ लो जैसे हाफ ऑफ द मंथ निकला और इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ में कूद जाओ। मतलब कूदो नहीं क्योंकि प्रीमियम सारे नहीं आते स्ट्राइक प्राइस में, तो वेट करो एक्सपायरी वीक का लिए तो तभी पोजीशन बनाई जाए इनफैक्ट। So yes, one of the biggest principles in option trading, especially when you are writing options, जब राइट आप seller हैं, you should never wait for 100% of the premium to decay. बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल 50-60% प्रीमियम decay मिल गया, हम्म, you should get out of the position because you are sitting on बिल्कुल a hot seat. मार्केट पे थोड़ा बहुत मूव भी दिया, हम्म, ऐसा नहीं है कि there are ways out, आप निकल सकते हो। अगर आप हम्म, deep in the money positions भी हो गई हैं, 10,500 की हम्म, कॉल भी पड़ी, still you can get out of it. राइट But then it requires time. बिल्कुल All these trades are time bound trades. तो आप अगर उसको एक आधा महीना और दे दोगे या 2 महीने और दे दो, ऑब्वियसली यू विल बी इन प्रॉफिट, राइट। और बिल्कुल सनी जब तक आप कहोगे नहीं तो हमारे लाइक्स कभी नहीं बढ़ेंगे, आपकी वेट होती रहती है। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा अपनी व्यूअर्स को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो रिक्वेस्ट है लाइक्स करने के लिए। So do not forget to like this राइट video, whatever discussion we are doing. And yesterday I got Susit, two kinds of messages in last 2-3 days. एक तो जो last video था on employed volatility, and we asked one question. Today also we are going to ask one question, right? We got very good answers. I'm really happy to see a lot of very good answers, and I'm not taking any names right now. And we have not replied to anybody saying that answer is correct or not correct because still a lot of people are seeing those videos. तो राइट बहुत से लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर देखते हैं. But yes, the question was that okay, in case there is a event, whether you should buy call and put. So राइट most of you got it correct, saying that okay, uh, since the employed volatility will increase drastically, it doesn't make sense to buy call and put just before the event. बिल्कुल क्योंकि उसके बाद अगर वो मूव भी कर गया, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रश, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो डाउन चली जाएगी, उसके कारण से द पर्सन इज नॉट गोइंग टू मेक सब्सटेंशियल रिटर्न्स। सम ऑफ यू हैव सजेस्टेड yes, instead of buying call and put they should be selling call and put, which राइट makes sense, but then उसके लिए भी you always need to have some hedging in the mind, राइट राइट right?
ओके मिस्टर ग्रेफा इज सेइंग 2 बार लाइक कर दिया। अगेन मैं 2 बार लाइक करने का ऑप्शन होता तो बहुत अच्छा हो जाता। ओके, बिल्कुल। थैंक्स फॉर डूइंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग इट ट्वाइस, आई एम थैंकिंग यू ट्वाइस, राइट। एंड ओके, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी सनी, आपका जो फेवरेट ट्रेड्स होते हैं? राइट, बैंक निफ्टी भी वैसे ही जैसे निफ्टी ने मूव किया वैसे बैंक निफ्टी वेरी आई। अनएक्सपेक्टेड, हाँ, वेरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बैंक निफ्टी ने मैंने देखा है कि जहाँ से इवेंट से गिरा निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी ओवर परफॉर्म कर गया निफ्टी को। ओके आप ओके देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा उसी लेवल्स के ऊपर ही आ गया जहाँ इवेंट था। ओके इवेंट के ओके, दिन इलेक्शन का रिजल्ट था, उसके ट्वेंटी ऊपर ही सिक्स थाउजेंड ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड के ऊपर चला गया, ऊपर ही चला गया। जबकि निफ्टी तब 10,930 चला गया था, वो राइट अभी भी 10,700 के नीचे है। राइट। ओके और बैंक निफ्टी वो ओवर परफॉर्म कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी के थोड़ा और ऊपर जाने की। ओके। तो अगर ऑप्शन डेटा देखें बैंक निफ्टी का तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही 27,000 पे है इस साइड कॉल साइड एंड पुट साइड 27,000 पे तो पहले 25। लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वी आर सीइंग 26,500 होता था क्या हमेशा, ये नहीं 27 ही होता, 27,000 ही 27 ही था, होता था? सत्ताईस ओके, हजार ही रखा हुआ था उधर। 25,500 और 25,000 था। अब वो 26,000 हो गया। हाँ वो छब्बीस। वेरी क्लियरली इट इज 26,000, 11,38,000 हो गया है on put side, राइट and call side it is still maintaining 27,000। I don't know, I doubt, क्योंकि 27,000 पे कल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज 5,73,000, उसके बावजूद इट इज 961 ओनली, राइट। right? So was it 26,500 earlier? I really don't know. आई थिंक नहीं, 27,000 26,500 हो गया था, क्योंकि Okay. यहाँ पर आप नेगेटिव 6 लाख देख रहे हैं ना, तो वहाँ 12 राइट, लाख पोजीशन थी। यस, तो 26,500 हाईएस्ट ओपन हो इंटरेस्ट गया था। था, हो गया बट था। यहाँ राइट पे क्या हुआ है, 26,500 ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ब्रेक कर दिया उसने, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। और नीचे से 26,000 की तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि पहले 25,500 था सनी, इफ राइट आई रिमेम्बर। बिल्कुल, उसी मायने, 25,000 से 25,500 आया था। yeah, नाउ इट्स 26,000। 25,500, and so again, one thing is very clear कि if trades are shallow compared to nifty, bank nifty trades are obviously very shallow, तो वहाँ पे इस तरह के moves आते हैं और इवन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को तोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल अब क्योंकि सारा का सारा प्रेशर इस एक्सपायरी पे होता है, जो बिल्कुल लास्ट वीक की एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में, ऑल द वीकली एक्सपायरी में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ट्रेड्स, बिल्कुल। बिकॉज फर्स्ट वीक और लास्ट वीक, सेकंड वीक और लास्ट वीक, यहाँ पे लास्ट वीक ही होता है। नेक्स्ट लास्ट वीक वीक अगर आप कोई देखोगे तो है ही ज्यादा नहीं। ट्रेड्स होंगे नहीं, राइट तो यहाँ पे अच्छे खासे मूव्स आ सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर इसी डेटा को एनालाइज किया जाए, 27,000 हाईएस्ट है और उधर से 26,000 हाईएस्ट है, तो उन दोनों के बीच समवेयर अराउंड 26,500, 26,500 व्हाट आई सी इज स्टिल कॉल साइड इज हेवियर देन पुट साइड। बिल्कुल। 6,15,000 है, ऑल्दो अगेन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम हो जाता है कि ट्रेड्स आर वेरी लेस, हम्म। राइट। तो वो ट्रेड्स को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए 26,500 की तरफ एक मूव मेरे को लग रहा है कि आना चाहिए सनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में चीज़ें चली गई हैं विद लास्ट 2-3 डेज, एक दिन दो दिन का, व्हेन मार्केट वाज बिटवीन 500 टू 600, इट वाज ऑल जस्टिफाइड। राइट जैसे 430 भी एक ओवर जस्टिफाइड ओवर मूव था डाउन साइड की तरफ, इस तरह जो कल का मूव है, दैट दिस इज आल्सो स्लाइटली इलॉजिकल मूव। तो राइट। होपफुली वी मे सी सम करेक्शन, बट जनरली क्या होता है कि जहाँ पे भी इन्होंने ट्रेडर्स को, पीपल हु वर शॉर्ट इन मार्केट्स, अगर दे आर नाउ स्टक अप, सो मोस्ट ऑफन देन नॉट दे विल नॉट लीव यू बिफोर एक्सपायरी। बिल्कुल तो वो इंडेक्स मैनेजमेंट जो होती है, वो इंडेक्स को दे विल कीप ऑन मैनेजिंग एटलीस्ट टिल एक्सपायरी, एंड वंस दे सी द डेटा दैट ओके मोस्ट ऑफ द शॉर्ट्स आर आउट ऑफ द मार्केट, देन ओनली द मार्केट विल गो डाउन। बिल्कुल तो यहाँ पे एक चीज हमेशा मैंने देखा है कि एक्सपायरी के वक्त तो जिस तरफ एक बार ले जाते हैं, देन दे विल रियली पुट यू टुवर्ड्स द वॉल, और बिल्कुल पुश यू टुवर्ड्स द वॉल, और वहाँ पे आपको जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि सपोज यू आर हैविंग सम ट्रेड्स जहाँ पे यू आर लूजिंग, राइट, जहाँ पे सपोज क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो स्टकअप होने का, इफ यू आर पुट सेलर इट्स गुड, यू आर मेकिंग मनी। बट इफ यू आर कॉल सेलर और बहुत ज़्यादा हेजिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन स्टक अप, बट आई विल से ट्राई टू hedge it as far as possible। अगर hedge नहीं कर सकते हैं, it's a right time, you shift this trade, roll over this नेक्स्ट trade, we will नेक्स्ट मंथ create a video on क्लियर क्लियर। rollover, राइट roll over this trade to next month and go away, and wait till Friday or next Monday, right? राइट राइट। डेफिनेटली ये जो मार्केट मैनेजमेंट के मूव्स, इंडेक्स मैनेजमेंट के मूव्स होते हैं इन द एक्सपायरी वीक, दे गेट रिवर्स्ड
आफ्टर एक्सपायर। बिल्कुल और डेफिनेटली। होता क्या है कि हम इसमें लॉस ले लेते हैं, अगला ट्रेड लेते नहीं है, और वो रिवर्सल का हमें वो कोई बेनिफिट बेनिफिट होता हो नहीं पाता। है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको रिवर्सल कर लीजिए। मैक्सिमम पेन इज 26,500 इज इट आई एज ऑफ थिंक नाउ बैंक निफ्टी? मिस्टर अरविंद सतीश इज सेइंग ओके, so 26,500 and 26,300 है सर आई थिंक। okay, as per your 26,300। okay, it is 26,300, राइट। market is 26,600। तो दोनों चीजों में से एक चीज होगी, या तो मैक्सिमम पेन ऊपर आएगा, या बिल्कुल। जो कि ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से इधर ले सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है, बट ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है कि ये होगा ही होगा। हो गई बिल्कुल। जैसे फ्राइडे को मेरी एक्सपेक्टेशन थी बाजार नीचे जाएगा, बट वो गया नहीं। हाँ, अगर मैंने उसको हेज नहीं किया होता तो आज मैं बहुत लॉस करके बैठा था, मेरी सारी चोटियां खराब हो गई होती। ओके, तो हेज करके चलना बहुत जरूरी है। बहुत एक्सपेक्टेशंस जरूरी। अलग चीज होती है, बिल्कुल। एक्चुअल मार्केट क्या करेगा नो बडी कैन टेल, राइट राइट? तो एग्जैक्ट। इसके, बट अगर आपके ट्रेड्स में देयर इज अ इशू, इट ऑलवेज मेक सेंस टू रोल इट ओवर। बिल्कुल। प्रॉब्लम इज इफ यू आर अ सेलर यू कैन रोल इट ओवर, इफ यू आर राइट। अ बायर बाहर तो रोल ओवर का कोई संभाल तो वो सिर्फ बायर हो अगर आप, तो वो पैसा नहीं। गड़बड़ हो ही चुका है, राइट। राइट? तब कुछ नहीं हो सकता, तब आप नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा बेटर हेज्ड ट्रेड करेंगे, राइट? थॉट ऑफ द डे: द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, the ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice. This is given by Mr. Brian Herbert. वेरी गुड थॉट, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा थॉट जब मेरे पास आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी, दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, प्रॉब्लम सिर्फ आती है विलिंगनेस टू लर्न। That is a choice which you need to make. Many times you see there are a lot of people who want to join our workshops also. उनमें कैपेसिटी है सीखने की, एबिलिटी है, एवरीथिंग इज देयर, बट वहाँ पे आके हम लोग के यार वेदर आई वांट टू विलिंगली मेक अ चॉइस कि मैं ये इतना पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ऑब्वियसली एक हार्ड एंड मनी होता है, तो सोचना तो पड़ता है, बट देन वहीं वहीं पे सारा डिफरेंस आ जाता है, राइट? यू सिर्फ कैपेसिटी या एबिलिटी होने से कुछ नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल यू शार्पन योर स्किल्स, यू गेट दैट काइंड ऑफ ए नॉलेज, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सो विलिंगनेस टू लर्न शुड ऑलवेज बी देयर, एंड दैट इज वेयर द चॉइस इज। जो गिफ्ट है आपके पास, जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं, बट अगर आपने राइट चॉइसेस एट राइट मोमेंट नहीं लिया लाइफ में, तो ऑब्वियसली जो भी एबिलिटीज हैं वो वेस्ट है, राइट? इफ यू आर नॉट यूजिंग योर एबिलिटीज, तो उन एबिलिटीज का होना ना होना एक जैसा एक ही ही बराबर है मेरे हिसाब से तो। अगर अगर हम देखें ये सीखना, चाहे पैसे देके या कैसे भी, है। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। दिस इज और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिल्कुल सेल्फ, राइट? तो बिल्कुल आप जनरली इन्वेस्ट कर रहे हम लोग ऐसा होता है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा हैं। हमें टफ लगता तब है। लगता है राइट। मेरा बेटा हो तो आईआईटी की कोचिंग ले रहा है, इसकी कोचिंग ले रहा है, उसका आई विल स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज, बट अपने आप के ऊपर इट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं अपने ऊपर 30-40 हज़ार रुपये लगाऊं कि नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊं, ऐसा सोचते रहते हैं, राइट? सो वो एक हो जाता है, एंड लेट्स सी, but this is very good. You need to use your capacities and your abilities by making right choices in the life, and one of the right choice can be attend our workshop in Bangalore or attend our workshop in Hyderabad. Second and third is Bangalore, and ninth and tenth is Hyderabad. So, what about the question? I'm going to show you the question. It's again, this is a pearls of wisdom. So that question is on wisdom. That question makes a lot of sense to me, at least. I really don't know how many of you would be able to answer it. And but I will request all of you, whosoever is watching this video, if you don't understand or if you don't appreciate anything in this video, I'll say just go through that question, बिल्कुल। and उसमें हम लोगों ने छोटी सी एक hidden advice भी दी है, and follow that advice, and give the results in the comment section. Let me show you the question for the today. Please write your replies in the comment section. Do not write your replies in the chat window, and you can write your replies in the comment section only when this video gets uploaded, which will be 15 to 20 minutes from now, once we finish this, right? Okay, so I am not reading this question. I am just keeping it for a very small period so that you can read it later and answer it. And okay, right? Please do participate in that question. It's a very interesting question. We'll talk about that question tomorrow. And obviously, we have already
given a sort of a reward that okay, out of total 5 videos, we will choose three participants. In last video, we got very good answers from many of you. So we will choose three participants who will be able to have a one-to-one conversation with us. So do not forget to like this video, make comments based on that question, or otherwise also if you have any comments, share this video to whomsoever you think is going to uh, be benefited by this video. And do not forget to subscribe if you have not subscribed it so far. Have a great day, have a great trading day, and have a safe trading day. Right. Because expiry is coming very close, so safety becomes much more important. Right? Thanks for coming. Thanks to all of you. Have a great day. Have a great day and thanks. Bye bye. Thank you. Tomorrow we'll be there again. Right. Right.